Just confirm if my Chrome is visible here. Visible. VS Code visible. Just hold on for a sec. Let me set up this. Yesterday was your second class of React, if I'm not wrong. Correct? Okay. So till now you have learned. Yesterday was all about, I guess, your components and what props. ठीक है, fine. So to write any React code, what do we need? We need the CDN links first. One more CDN link is required. What is that? Big. ठीक है. Setup is ready. Okay. So in any React application, what is the building block of any React application? That is your component. Correct? We have learned this in previous doubts as well. Correct. And what is a component exactly? Correct. It is just a regular function, but some rules are there. What are these? First alphabet should be capital. Secondly, you can call it with the as a tag when you are rendering. Correct? Okay. So whatever you will be building in React, you will be building it through the components. So these functions, your component basically, what they will return? Component returns what? What the component returns in React? Normal JS, JSX. No. JSX we write in component, but it will not return like that. Your component returns element. And what type of element exactly? React elements. Correct. That thing we have done. Your Babel converts your JSX to React elements that we will returning from the components. Correct. They can be simple as well. They can be complicated as well. सिंपल मीन्स आपने कोई एलिमेंट बना दिया और उसको खाली रिटर्न कर दिया. कॉम्प्लिकेटेड मीन्स आपके कंपोनेंट में there can be multiple other components also that you will be calling. Correct. ठीक है.
So let's see whether our setup is working or not. So anything you will be rendering in your React application is in this root. Okay. So firstly, let's sketch the root here. And how will we be building it? Through the React or React DOM? React DOM, correct. React DOM dot create root, correct. And what will be providing as a parameter is the place where our root exists in HTML, correct? Okay. Let's say we are creating an element and this element is containing some JSX code. So you can say any H1 element. H1 is saying hello. So I want this element to get rendered in my root element. So what is the procedure? Root element dot render element. Let me open the live server as well. Works. So this was a simple traditional method of doing it. Now you can do the same thing with the React component as well. So what you will do? One second. So we will be okay, this thing you have seen to the root element, we are entering this element. So same thing you can do with the functions as well. Say you are having a function ABC which will return you some JSX code. Okay, ये बनाया हमने. Now what I want is this will always return you this, correct? This will always return you this P element which is saying hello, correct? So what to do? What if I want to make this message dynamic? We have to pass it from here, correct, as a prompt. So let's say I'm having a prompt message, fine. And instead of this hello, I can pass here message. Will this be fine? Okay. So let's say now we are building our element. Let our element
is equal to, and here we'll be having a div का class name वगैरह you can give it, and in this division what we'll be doing, we'll be calling our abc function. Okay, and if we want to call any function is a written in JS, correct? So what we can do is we can have a curly braces, and inside that you can call it as a, can we say we have called it here? Whatever it will be returning, we'll be getting here. What is the thing that is remaining is we have to pass our message. Exactly. So message can be passed directly as well, but we want to have it as a prop क्योंकि वहाँ पे हम destructure कर रहे हैं, correct? So what I'll do, I'll create another curly braces and इसके अंदर I'll write this message. Message से hello world. Works. And now I'll render this element. Will I get this message in my page? Let's see. I'm getting it. Correct. So are we using any components here? Can you say this ABC a component? Correct. ABC is not a component. So what is ABC? ABC is just a function that we are calling inside our element. Correct. So if ABC is not a component, is this a prop? Most of you are saying no. Okay. It is just a simple parameter. It's an argument. Correct. So let's convert it into a component. If I make it with capital A, ABC, now is it a component? We have changed nothing. Correct. And the way we will call this here will be completely different. Yes or no? Div के अंदर we'll be calling it like this. And we can have multiple components as well. Message and say person. किसको ये message देना है? Fine. Message and what you can say to this person. Correct. And now at the place, this person is basically a prop to this ABC that we are passing. Correct. So here we can write person as well. Person say Rahul. It should work. Hello world to Rahul. Works. So P1 is pretty simple. ये जो भी मैसेज है आपके पास, मैसेज इज अ स्ट्रिंग ओनली, तो वो स्ट्रिंग एक बेसिकली यू कैन से इट्स अ जेएस थिंग. करेक्ट, क्योंकि इट्स अ वेरिएबल विच इज स्टोरिंग समथिंग. करेक्ट, दैट्स व्हाई वी हैव टू कॉल इट इन आवर कर्ली ब्रेसेस. We can't write directly message. If I directly write it as a message, it will not be comprehended as a variable. It will be comprehended as just as a text जो आप p के अंदर लिखते हो. Correct. So instead of hello world, it will saying me message. Correct. That's why we are having it in the curly braces क्योंकि it's a part of our props.
करेक्ट, नेम विल अपडेट अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, क्योंकि इसको भी हम एज अ वेरिएबल पास कर रहे हैं. फाइन गाइस. या सो these are the two props that we are passing. So you can take it as a props also. Now what will be there inside the prop? First of all, what will be the prop? Is it a array? Is it an object or what? It's an object. Let's call it console.log r prop. Some people are saying array, some people are saying object. Okay, let's see. Let's comment this out and let's see. What is it? It's an object which is having two key value pairs. One is message, one is person. Okay. So now if you are not destructuring it, you have to call it with the help of props object. So यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? Props के अंदर आपका मैसेज है, करेक्ट? Props dot message and props dot person. Is it clear? If you are not destructuring it above, you have to call it with the object name. It will say the same thing, correct? Yeah, it should be clear. So let's say जैसे आपकी एक्टिविटी भी थी है, we have to create a card component and it will accept props, which will be title and content, जो भी है. ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग. ठीक है, पहले इसको ही बना लेते हैं. ओके, वी कैन क्रिएट द कंपोनेंट. वी डजंट रिक्वायर दैट टाइटल और कंटेंट फॉर नाउ, क्योंकि वी आर जस्ट पासिंग दिस ओनली. सो फर्स्ट थिंग वी वांट टू if you want to create this component is we have to have a function like this, correct? And as you already know, your component will returns a react element, correct? In this case, we have to create a react element that contains this title and content. Fine. So we will return, say, ठीक है, एक डिवीजन ले लेते हैं, h1 title and p tag as a content and division close. Works. So what this card is returning, it is returning a division and this division is containing an h1 and a p, correct? Whenever you will call this card component with title and content, you will get this division. Simple. Okay, ठीक है. एंड देन वो क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको एक ऐप कंपोनेंट ही बनाना है. बिल्ड ऐप कंपोनेंट जिसके अंदर आपके कार्ड कंपोनेंट नेस्टेड रहेंगे, something like that was question that will have a card component nested. Okay, there can be multiple. Fine. ठीक है. And each card will display different information. Fine. So let's say आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, array of object. Let array equal to like this. इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं एंड हर ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल और कंटेंट है. ओके, सो लेट्स से एक के अंदर टाइटल है आपका टाइटल वन, कंटेंट कंटेंट वन, चलेगा ऐसा, करेक्ट?
नाउ दिस एरे इज कंटेनिंग 4 ऑब्जेक्ट्स, और ये चारों हमें यूज करने हैं विद इन द कार्ड। ओके, जब हम ऐप के अंदर इसको रेंडर कर रहे होंगे। सो लेट्स से अपने पास एक ऐप कंपोनेंट है। ठीक है, नाउ व्हाट दिस ऐप कंपोनेंट विल डू। App is a component, so what it should return? Every component will return. Tell me, guys. It will return the React element, guys. Yes or no? So this app component will return a React element, and that React element should contain all the 4 आपका जो कंटेंट है एरे के अंदर। करेक्ट। सो व्हाट यू कैन डू, one thing is we need to have a for loop on this array. Correct. So where will you use the return statement? The question is that. ठीक है, आप लोग ऐसा बोल रहे हो कि एरे डॉट फोर ईच में लगाता हूँ एलिमेंट, फर्स्टली इट शुड रिटर्न, आई शुड रिटर्न फ्रॉम दिस कार्ड। करेक्ट। रिटर्न व्हाट? कार्ड, and this card is containing title as element dot title and content as element dot content. Works. So where it will return this? Don't you think it will return one by one through this app? क्योंकि फोर ईच का अपना कुछ रिटर्न नहीं होता, इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। करेक्ट। ओके, लेट्स ट्राई टू रेंडर इट। Okay, let's take the votes. How many of you think this will work? You will get all the title and components in our page. You can press one in the chat, otherwise zero. Just observe it for a minute and then tell me in the output. Might be confusing for you. No issues. Okay, G1 is saying it will be only having one card component. Okay. Others are saying one, zero. I'm not seeing anywhere. Are we having anything? We are not having anything. Neither we are having any errors. So what should be done? Someone is saying add another return statement. Nothing is working. Call app function. Here we are calling, na? We are rendering app only. Inside return, make a div for somewhat close G1. Okay. Okay. So what G1 is saying, inside this app, use return a division जिसके अंदर आप ये कॉल कर रहे हो, राइट जीवन?
एज दिस JS कोड, सो हमें दोबारा इसको रैप करना पड़ेगा. विल दिस वर्क? नाउ दिस ऐप विल रिटर्न दिस div, एंड इस div के अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग these cards. Will it work? According to some of you, it will work, but in actual, it will not work. So where we are missing? Okay, let's see in the elements. Are we having anything inside this body? Division root. We are having one div, but div के अंदर कुछ नहीं है. Can you see that? Yes or no? We are having one div in the root, but we are not having any card in it. But return नहीं आएगा. Okay. What we are having in this root now? One div only. We are not returning anything. Fine. Use map. Okay. We have used map. Return. Does this work now? Yes, but how? ठीक है. So आपको उसके पहले अपना JS का कॉन्सेप्ट सही करना पड़ेगा. तो for each is very similar to for loop. For each is similar to for loop. Yes or no? इतना पता है? ठीक है. तो कभी भी हम for loop अगर यूज करते हैं, 0 let's say and I lesser than say 5 and I plus plus. So अगर आप कहीं भी ऐसा रिटर्न लिख दोगे इसमें, रिटर्न से I, तो what will happen? What will happen? जैसे ही वो फर्स्ट टाइम इटरेट करेगा इस for loop में, इट विल रिटर्न द फर्स्ट टाइम ith इटरेशन विच इज 0, और उसके बाद for loop चलना बंद हो जाएगा. यस और नो? यस. तो सेम चीज आपकी for each में हो रही थी. For each doesn't support any return statement, if you remember. For each is just to iterate over your array, but map supports it. yes or no? जब भी आप मैप का यूज कर रहे थे पहले, लेट मी शो यू रिकैप. क्रोम इज यूजुअल ना? Okay, so let's say you are having an array 1 A C D E. ओके. सो अगर आप फॉर ईच यूज कर रहे थे, एरे डॉट फॉर ईच, एलिमेंट एंड नॉट कंसोल रिटर्न. ओके. मैं रिटर्न यूज किया और यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ एक बार. कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट. ओके. सो इफ हाउ मेनी टाइम्स डू यू थिंक इट विल रन? लेट्स रन इट. व्हाट आर यू सीइंग? हाउ मेनी टाइम्स? एरे डॉट लेंथ. व्हाई इट इज? क्योंकि दिस रिटर्न ओनली हैम्पर्स दिस कॉल बैक फंक्शन. यस और नो?
It will not hamper the main for loop which it was running. So अगर मैं इसके अंदर एक callback function लगा देता हूँ and I will say return I. So firstly, which function would end? The callback function or the for loop? Only the callback will end, no? Yes, that's what happening there. तो यहाँ पे सिर्फ पहला कॉल बैक ही एंड हो रहा है. जो मेन फोर लूप है फॉर ईच का, दैट इज नॉट एंडिंग. बट द थिंग इज, वो कौन 5 बार चल तो रहा है, बट लेट्स से आपके पास यहाँ पे आपको स्टोर करना है व्हाट इट इज रिटर्निंग. नॉट एलिमेंट, लेट्स से एबीसी, एंड आई वांट टू कंसोल दिस. व्हाट डू यू थिंक आई विल बी हैविंग? Not undefined, guys. What we are having? Undefined only. Why undefined? क्योंकि this for each will not return anything. This is the working of it only. But if you are having map, what you will be having in the ABC? Map will return what? It will return an array only. Fine. And in that array, we are returning each element one by one. But we can say from this, map supports return statement. Yes or no? Newly modified, you can say. अगर आप चाहते हो कि एलिमेंट प्लस आई रिटर्न करे, आई तो है नहीं अपने पास, तो आई ले लेते हैं index. Now what we'll be having? We'll be having a new map which will contain the indexes as well. Fine. Modified version basically. Okay. So that's why when you were using return statement with for each, you were not getting anything. You can console it. You will see that, but it will not return anything. So हमें map use करना पड़ेगा to return, because only map supports, not only but map supports return statement. Fine. What else supports? Filter also supports. So do you think we will be having the cards? We are not having. Why? What do we have to return? True or false? या कार्ड फिल्टर में? एचएफ दोबारा पढ़ने पड़ेंगे गाइस आपको. रिड्यूस क्या करता है? रिड्यूस क्या क्या रिटर्न करता है रिड्यूस? सिंगल एलिमेंट, बट एलिमेंट शुड बी द सेकंड थिंग. Accumulator then element. So do you think we will be having one element only? Can you see? Only the last one it is returning. Correct. So please brush up your HOFs afterwards. You will get all these things. So for now, we want all the elements, so we are using map. Okay. Here no accumulator will be there. Fine. Clear? See this for a minute. I'm just coming.
Okay. Abhijit is saying filter is returning new modify array also. नहीं अभिजीत, but it will return an array, but what it wants here, true or false? Yes or no? We want a condition here. Is this a condition? No. So if we say return true, and instead of it, we'll be using filter. Do you think we'll be having components now? No. The logic you are thinking is correct, but are we having any card component here? What it should be returning? It would be returning this element only. And what is this element? So that's why. Okay. ऑब्जेक्ट तो रेंडर नहीं होगा ना, ओनली कार्ड वी शुड रेंडर. क्लियर ना अभिजीत? ओके. नेक्स्ट थिंग वाज, आप लोगों ने अपने नोट्स देखे? लेक्चर्स, वन सेक. दिस वाज इट ना यस्टरडे. ठीक है. हियर आर द नोट्स. और यहाँ पे हमें सिर्फ आर्किटेक्चर देखना है, ये आपके रिएक्ट कंपोनेंट आर्किटेक्चर. सो अभी आपने देखा जैसे वेयर यू वर हियर, हम ऐप के अंदर डिफरेंट कार्ड एलिमेंट को भी रेंडर कर रहे हैं. करेक्ट. सो ऐसे ही इफ वी आर हैविंग मल्टीपल अदर कंपोनेंट्स, कैन वी रेंडर देम इनसाइड आवर ऐप? We can, no? So that's what the architecture is. So suppose this is your app. Okay. This whole app. You know, React follows what? SPA. Remember? Single page application. So you can say that this whole page is your single page application. This is your app where all the components will get rendered one by one. Okay. So this is your app. जैसे हमने ऐप के अंदर अपना कार्ड कॉल किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐप के अंदर आप इस फीड को लोड कर सकते हो. करेक्ट. Feed is another component, and search is another component that you can write inside that you might like. And also जो आपका समझ चलो ये फीड कंपोनेंट है, इस फीड के अंदर भी देयर कैन बी चिल्ड्रंस. यस नो? फीड के अंदर भी देयर आर ऑल्सो सिंगुलर फीड्स. करेक्ट. मोस्ट ऑफ देम इज लुकिंग सिमिलर इन दैट, so we can destructure them also. Yes or no? These tweets are also the component which are being called under the feed component, as feed was called under app. करेक्ट. ऐप के अंदर फीड है, फीड के अंदर ट्वीट्स हैं. यस और नो? नेस्टेड नेस्टेड थिंग. एंड दैट ट्वीट आल्सो कैन बी सेपरेटेड आउट मल्टीपल टाइम्स, लाइक उसका नाम, उसका यूजर नेम, यू कैन से पिक्चर, और उसने क्या ट्वीट किया. करेक्ट. ऑल दिस डाटा ओनली विच आर वेरिएबल. These are all the variables in this tweet. Correct. So variables can be passed as a prop. Yes or no? Don't you think these things can be passed as a prop? जैसे हम यहाँ पे टाइटल और एलिमेंट को पास कर रहे थे.
Don't you think Twitter is also having this kind of array array of tweets जिसके अंदर an object there is information about that tweet? करेक्ट, दैट कैन बी पास एज अ प्रॉप। और उस जो ट्वीट का कंपोनेंट है वहां से ऐसा एक स्ट्रक्चर बन के हमारे पास रिटर्न हो जाएगा, रिएक्ट एलिमेंट। यस नो, एंड द वेरिएबल्स वुड बी related to the content inside your key value pairs. Correct. So this is nothing but architecture. Can you see here? ऐप के अंदर नेविगेशन है, फीड है, सर्च, एंड फीड इज हैविंग ट्वीट, और ट्वीट के भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। Got some clarity around this? So guys, tell me one thing, whether you have done conditional rendering yesterday or not in the lecture. हुआ था क्या? ठीक है, एक बार वो भी रिवाइज कर लेते हैं फिर। ओके, सो लेट्स से इसी के अंदर आई हैव अनदर की वैल्यू पेयर विच इज से आईडी है, ठीक है। ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट इज कि जिस भी आईडी, जो भी आईडी मेरी अगर ऑड नंबर है, ओनली दैट शुड बी रेंडर्ड इनसाइड माय ऐप। तो व्हाट आई कैन यूज, and this id information is under this element. Correct, all the information, title, content and id is under this element. So condition where we want to have if else ternary, would it work with if else? if else चलेगा, आपने बोला ऐसा, ठीक है। if element dot id is odd, it should be like this condition, return card, उसमें हम की डाल दिया, ठीक है, इन्होंने की हम हटा देते हैं, की नीचे टाइटल एंड कंटेंट, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट विल वर्क? एंड बिफोर आंसरिंग please have in mind what map returns. Okay, this is odd now. Okay, fine. Do you think I will get this ID1 and ID3 cards? See, works. Fine. Easy. If else easy, else की जरूरत नहीं है. But can anyone tell me if I want to use a ternary operator, what should be the syntax? It will work. You have seen that.
about it. If I want to use ternary operator, how I can return those cards which are having IDs odd numbers. About it. Okay, Rahul is saying element dot id modulo 2 if equal to 0 है, नॉट 0 1 है, तो हम एक कार्ड रिटर्न करेंगे ऐसा. लाइक दिस राहुल. व्हाट वी आर हैविंग इन द एल्स. एल्स में क्या करेंगे. एल्स में तो नहीं चाहिए अपने को. एल्स में लेट्स से h1 है. Why it is showing us errors? We are not returning. Where should I use the return statement? Yeah, nothing as of now. No errors as well. We are missing the return statement. Return किधर लगाने का. इनसे पहले. No. Before element. Okay. It should work. It is working. Otherwise, we will return nothing. ऐसा. Not work like this. Return what from here? Can we use another return statement? But we have to return in the else. Okay. Return this. What is this? No. रिटर्न तो हम कर ही चुके हैं ना. हमें रिटर्न थोड़ी करना है कुछ. रिटर्न स्टेटमेंट यूज ही नहीं करनी. वर्क्स. फाइन गाइस. This is some different kind of error that you will learn afterwards. Okay. This is not an error actually. Just a warning. Okay. Works guys. If this condition is true, we are returning the card. Otherwise, we don't need to return anything. Can we remove this? Okay. null कर सकते हैं. ठीक है. Works. Conditional rendering of cards. Okay. Have you seen your assignments as well? Anyone having any issues in any of the assignments? ठीक है, आप लोगों से ही पूछ लेता हूँ मैं. If you have tried it, then only we will do. Tell me guys, if you are doing the assignments, are you facing any difficulties?
क्योंकि for now the assignments are pretty easy only. Okay. If you are not, if you are in the classes, you might have done them in 10 to 20 minutes max. Not attempted. Okay. Why you're not seeing only? देखें आपने, अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, कोई बात नहीं. The first thing you should see after the class is your assignment, whether you will be able to do them or not. Are you having that much confidence or not? Correct. पहले तो देख के ही लगना चाहिए ना कि जो भी मैंने आज क्लास में पढ़ा है दैट उसके रिलेटेड ही असाइनमेंट एंड आई विल बी एबल टू डू दैट. ठीक है, नहीं देखे तो वी विल नॉट ऑल्सो सी. पहले आप देखो. इफ यू आर हैविंग डाउट्स देन ओनली आई विल डिस्कस देम. देख के लगता नहीं होगा भाई अभिजीत. देखो अभी इनिशियली वी आर नॉट गिविंग यू एनी हार्ड असाइनमेंट्स, क्योंकि आपका रिएक्ट अभी स्टार्ट हुआ है तो वो बर्डन लगता है, न्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स होते हैं. करेक्ट. सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर अबाउट रिएक्ट. जो भी आप पढ़ रहे हो वो आगे जाके कैसे यूज होने वाला है, या उसके मल्टीपल आपके पास सिंटेक्स में आपको कुछ कुछ इशू आ रहा होगा कई लोगों को. करेक्ट. हाउ टू कॉल द प्रॉप्स, हाउ टू कॉल द कंपोनेंट्स, how you can define the structure also if you are building the nav bar. Correct. So वो स्टार्टिंग में लगता है, तो जितना हो सके असाइनमेंट्स करने के बाद ट्राई टू बेसिकली प्रैक्टिस द सिंटेक्स ऑफ इट. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो. ओके. ठीक है, इतना ही था. तो अभी आपके पास जो 1 घंटा बचा है 9 to 10, प्लीज सी योर असाइनमेंट्स एंड ट्राई टू डू दैम. ओके. क्योंकि नहीं करोगे तो कोई फायदा ही नहीं है फिर क्लास लेने का. विल डू. ठीक है. So this is all for today. You guys can drop off if you are not having doubts. If you are having doubts in anything that you have learned in previous 2 sessions, you can raise your hands and ask.